निवेदन आप सभी से, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग खड़े हैं वो भी मोबाइल फ़ोन अपना ज़रूर साइलेंट मोड पर कर लें। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और आपकी उपस्थिति को हम नमन और वंदन करते हैं, क्योंकि आपके आगमन से ही ये लक्ष्य और ये उद्देश्य पूरा होने का एक संकल्प मजबूत होता है। हम सबका एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय है, क्योंकि न्याय के बिना जीवन सम्मानजनक नहीं हो सकता। और उस जीवन में जिसमें सम्मान ना हो, निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक दायित्व के रूप में हम सबके ऊपर जिम्मेदारियां उसकी बढ़ जाती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबको उस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में और हमें मजबूती देगा और सशक्त बनाएगा, सक्षम बनाएगा। और हम अपने इस लक्ष्य को, यानी वर्ष 2047 जब हम 100 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरी करेंगे और स्वतंत्रता के इस 100 वर्षों की इस यात्रा में हम कहाँ होंगे, ये तय करेगा। ये आयोजन इस रूप में वो मार्गदर्शन करेगा हम सबके लिए एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल के संकल्प को सिद्ध करने के रूप में। आप सभी से निवेदन, प्रार्थना आप सबके सहयोग के लिए।
देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगमन हो रहा है सभागार में। आइए हम सब खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट के इस उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन आज इस उद्घाटन सत्र में हम सबके बीच हुआ है। साथ ही स्वागत अभिनंदन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के पैटर्न इन चीफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N.V. रमन्ना का आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ का भी आपकी करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस आयोजन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की ओर से देवियों सज्जनों आप सबका वंदन है, आप सबका अभिनंदन है। यह हम सबके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब देश में पहली बार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन यहां आयोजित किया जा रहा है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में यह सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः स्वागत अभिनंदन मैं निवेदन करूंगा भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N.V. रमन्ना से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहां मंच पर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। एक मेमेंटो, एक स्मृति चिन्ह के साथ इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत। राजस्थान के ग्रीन जेड स्टोन से बना ये एलिफेंट प्रतीक है और प्रतीक माना जाता है देवियों सज्जनों विजडम का, जस्टिस का, कंपैशन का, मॉडेस्टी का और करेज का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन आज के इस अवसर पर। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित जी से कि वे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N.V. रमन्ना, माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश और पैटर्न इन चीफ नालसा, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें मेमेंटो भेंट करके। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नालसा के पैटर्न इन चीफ के रूप में आपका मार्गदर्शन हम सबको बहुत प्रेरित करता है, हम सबका मार्गदर्शन करता है। इस अवसर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा नालसा के मेंबर सेक्रेटरी श्री अशोक जैन से कि वे माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस मंच पर, उनका स्वागत अभिनंदन करें। उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करके देवियों सज्जनों आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ। नालसा के मेंबर सेक्रेटरी श्री अशोक जैन से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वे माननीय जज सुप्रीम कोर्ट और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित जी का स्वागत करें, जिनका नेतृत्व और जिनकी प्रेरणा और जिनके मार्गदर्शन में ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन देश में पहली बार होने जा रहा है, जिसका शुरुआत, इसका इनॉग्रल सेशन यहां पर आरंभ हो रहा है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित का। नालसा के डायरेक्टर श्री पुनीत सहगल से मैं निवेदन करूंगा कि वे ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ का यहां पर स्वागत करें इस मंच पर। उन्हें भी एक मेमेंटो भेंट करके आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों पुनः नमन है, पुनः वंदन है आप सभी विभूतियों का। मैं निवेदन करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित से कि वे मंचासीन विभूतियों का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें अपने स्वागत संबोधन के साथ। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, Honorable Chief Justice of India and Patron-in-Chief Nalsa,
Honorable Shri Kiren Rijiju ji, Honorable Union Minister of Law and Justice, Government of India, my esteemed colleague, Dr. Justice Chnadrachud, Honorable Judge, Supreme Court of India, my brother and sister judges of the Supreme Court of India. There are some of the Chief Justices of various high courts who are present, all the Chief Justices of various high courts, some of the judges of the High Court who in their capacity as the panel members are here. Then Justice A.P. Sahi, the Chairperson, National Judicial Academy, all the members of executive body of Nalsa, central body, all the members who have come from the length and breadth of the country, that is all district legal services authorities, the chairpersons of district legal services authorities, the member secretaries of district legal services authorities, all the member secretaries of various state legal services authority, and whoever is associated with the work of legal aid in this country, all the media persons, electronic or print media, and everybody who is present here, ladies and gentlemen. Today we are assembling here as a convention for all the persons who are in charge of district legal services authorities, and about 1,200 delegates are present here. The hall is filled to the capacity. In fact, we had to accommodate people in the adjoining hall so that they could be participating in the proceedings through virtual mode. We have completed 25 years of legal aid service in this country. In last 25 years, we have learned from our experiences. We have made certain course corrections and have gone about. Last 15 months have seen two basic, very broad and ideas which are emerging is the success of Lok Adalats is one, and the kind of awareness program that we could initiate, we could propagate, and we could complete that in 42 days' time. Our idea was to reach every village in the country at least thrice in that period of 42 days. We covered in that 42 days 19.5 lakhs. Our villages are 6.78. So that means about thrice the target that we had set for ourselves. We completed that. Now, some of the programs which are now in the offing are that we want to, on the lines like Public Prosecutor's Office in a district, we want to have legal aid defense counsel system. To start with, we have selected 350 districts in the entire nation. In the first phase, we will start this program. In the second phase, we will complete the entire process. These 350 districts also comprise of 112 aspirational districts, which according to Government of India are to be given top priority because there are certain parameters, perhaps I think the infrastructure, the facilities, the opportunities are not available of the nature which is normally demanded or accepted. So we will start those activities. We have other programs which are also in the offing. Every district legal services authority shall be now equipped with e-library. The office will function as a nodal office so far as all the prisoners in the district are concerned, to have an interface with them. All the other activities, namely protection officers, which are contemplated under the provisions of Domestic Violence Act. So the activities are increasing. Your role, what you have displayed in 42 days program, awareness program, was of such spectacular character. You are the persons who work at the ground level. It is through you
that the flame of awareness was actually taken to every remote corner of the country. You are the persons who are going to be dispensing, going to help in dispensation of legal aid. And that is why this convention was thought of, so that we can have an interaction, we can learn from each other's experience, and then chart out a course for next 25 years. Our goal now today is what we chart out today will be for 2047. So welcome you all. Thank you. बहुत बहुत आभार ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित का। महोदय, आपके मार्गदर्शन में नालसा की गतिविधियों में जो विस्तार हुआ है, जो नवाचार हुआ है और लगातार हो रहा है, उसी दिशा में ये पहला ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की मीट भी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जब तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय के हाथों इसी विज्ञान भवन में पैन इंडिया अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, आप स्वयं देश के अलग अलग हिस्सों में गए, ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसका आपने व्यक्तिगत तौर पर आकलन भी किया और उसके लिए मार्गदर्शन भी किया, और उसी का ये परिणाम है पहला ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट। हमें बहुत खुशी है और ये सौभाग्य की बात है कि इन सारे प्रयासों में माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू का व्यक्तिगत रूप से भी और उनके नेतृत्व में मंत्रालय का भी लगातार सहयोग हमें मिलता रहा है और मिल रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पेट्रोन इन चीफ नालसा के जस्टिस N.V. रामाना जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के जस्टिस U. ललित जी, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के अथॉरिटीज़ के चेयरमैन, नालसा के ऑफिशियल्स, जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इनवाइटेड गेस्ट, मीडिया बंधु, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बैठक नई दिल्ली में किया जा रहा है और हमारे बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना एक ऐतिहासिक पल है और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका सोच, उनका सुझाव सुनने के लिए बहुत ही उत्सुकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आप सबको मालूम है, विधिक साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से समाज के वंचित और पिछड़े समूह को सशक्त बनाने की ये प्राथमिक इकाई है। हमारे देश में जन जन तक न्याय की अंतिम मील तक पहुंच आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनी सेवाओं के वितरण में समता और जवाबदेही और सुलभ पहुंच, इनके 3 आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम वास्तविक और स्पष्ट पर देश के शासन में नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं। इस संदर्भ में मैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ राज्य और जिला विधिक सेवा
प्राधिकरणों को देश में जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने और सशक्तिकरण की ओर मजबूत प्रणाली विकसित करके समाज के हर वर्ग के लिए न्याय हासिल करने के उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नागरिकों के द्वार तक न्याय में एक अनुकरणीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। You all are well aware of a very, very fruitful meeting of the Chief Ministers and the Chief Justices just recently. And we had discussed on various issues in the presence of the Honorable Chief Justice, all the judges of the Supreme Court, and the Chief Justices and the Chief Ministers. I feel very privileged to inform you that the issues raised by Honorable Prime Minister in the Chief Ministers and Chief Justices Conference are being taken seriously by all of us. Honorable Prime Minister had mentioned specifically about the plight of the under trials prisoners lodged in various jails in the country. Honorable Prime Minister also appealed to the Chief Ministers and the Chief Justices of the High Courts to prioritize the cases involving under trial prisoners on humanitarian grounds. I feel privileged to inform that as part of the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Nalsa has launched a campaign, Release Under Trial Review Committee at 75. Nalsa has taken various steps, and from July 16, 2021 onwards, it was an effort to identify eligible prisoners and recommending release of fit cases to the Under Trial Review Committee. District Legal Service authorities have been mandated to hold weekly meetings of Under Trial Review Committee to discuss progress, review additional cases, and to discuss further action, including filing of bails in High Courts and Supreme Court if required. These meetings are scheduled every week till 13th August 2022 and aim for release of maximum number of under trial prisoners on or before 15th August 2022 while we are celebrating our Azadi Ka Amrit Mahotsav. This year marks the 75th year of India's independence. In this historic year, the Department of Justice and National Legal Service Authority have decided to work together to provide integrated delivery of legal services in 3 key areas of common interest. That is strengthening pre-litigation advice and consultation through tele-law. 2, expanding the base of pro bono lawyers under the Nyay Bandhu program. 3, empower the citizens with legal literacy and awareness in 112 aspirational districts of our country. It is a matter of great pride that the Department of Justice and Nalsa have entered into an understanding for achieving the highest good of justice for all and established the rule of law as the greatest unifying factor among the citizens. Nalsa would provide the services of 700 lawyers in each district exclusively for tele-law program. These empaneled lawyers would now also act as referral lawyers and also assist in strengthening the mechanism for dispute avoidance and dispute resolution at the pre-litigation stage. I was amazed to see the enormous scale at which Nalsa organized the Pan-India Legal Awareness Program from 2nd October 2021 till 14 November 2021 under the pious occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This was a tremendous achievement, and this is the most ideal way to live up to the expectation of our freedom fighters who dreamt of ensuring access to justice for all common citizens. I speak here with a sense of pride on the judiciary's participation on the International Day of Yoga on 21st June 2027.
In fact, the participation of judiciary across all ranks by the Supreme Court of India, all the 25 high courts and district and subordinate courts across the country, led by the Honorable Chief Justice and the Honorable Judges of the Supreme Court and the High Court. This was totally a first-time experience for me, and it's unprecedented that judiciary has taken a lead role in celebrating such important occasion like International Day of Yoga. I take this opportunity to beseech you also again for your participation in the Har Ghar Tiranga under the ongoing Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this campaign, all citizens have been encouraged to host national flag in their homes during the Independence Day week celebration from 13th to 15 August 22, so as to instill a sense of pride and patriotism for the national flag amongst all. I would therefore request your support and leadership in encouraging the judiciary and official staff of the Supreme Court, High Courts, districts, and subordinate courts to wholeheartedly participate in the national campaign, Har Ghar Tiranga. I would also take this opportunity to appeal, especially the district judges, that the government has launched a special offer, 75 days of booster dose vaccination. Every staff member of the district court, in the high court, must be ensured to take this benefit and get themselves benefited to stay safe and secured. Because we want our judicial officers, our judges to be fit and safe. If you are safe, if you are secured, it will create in a better atmosphere in delivering justice to the people. We care for our judges. All of you are well aware, recently we passed Family Courts Amendment Bill 2022 in the Lok Sabha. It will be tabled in the Rajya Sabha next week. Lots of members of parliament have raised issues which I would like to echo before you. Family is a very important component of Indian culture. There are various issues. I will not dwell into it in detail, but why should somebody suffer, especially the children? The young children, why should they suffer if there is a problem between the adults, if there is a problem in the family? Dependency in the family courts is a worrisome. So I would like to appeal that, especially the district judges. Let us work together. We will cooperate, state governments will cooperate, but the leadership role have to be taken by the district judges. We must ensure the early settlement of all the cases which are pending in the family courts. There are more than 11 lakhs cases pending at this moment. And in the previous Chief Justice and Chief Minister's conference, it was agreed that the state government and the High Court, the Chief Justice of High Courts and the Chief Ministers will work closely to create better atmosphere, better infrastructure for faster delivery of justice. This is a great occasion when all the district judges of the country are gathering here. We must take a pledge to provide faster justice to especially the young children who suffer because of the problems created by the adults. As I said, we are all here to listen to Honorable Prime Minister's advice, his thinking, his vision, but I would like to make one more appeal that in this Amrit Kal, district legal service authorities should not only remain as a center of legal aid, but our district legal service authorities must be center of legal care and compassion. I take this opportunity to also extend my greetings and felicitations to forerunners of legal service authorities, especially the district legal service authorities and the Tehsil legal service authorities and all their chairpersons.
the district judges, and the member secretaries for their commendable service to the country. I wish all of them success in their future endeavors, and also I would like to extend best wishes to all of you for this 2 days conference which is being held in New Delhi, and Honorable Prime Minister's presence has really defined this first ever District Legal Service Authorities meet as a historic. The government will always stand by you. Honorable Prime Minister's vision, his commitment will be taken forward. As a Minister for Law and Justice, I will always be there whenever you organize any event in the district level, tehsil level, or in the state level. We are all together in delivering justice to the people. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरेन रिजिजू का। दिव्य सज्जनों, हम सब के लिए जिस न्याय के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही हैं, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, इस यात्रा में जिनका संरक्षण भी हमें मिलता है, जिनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है, वो विभूति हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के पैटर्न इन चीफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N.V. Ramana. May I now request His Lordship, Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, for his valuable guidance and motivation. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice, Shri Kiren Rijiju ji, my brother Justice U. Lalit, Executive Chairman, National Legal Service Authority, my brother Justice D.Y. Chnadrachud, Judge Supreme Court of India, Shri S.P. Singh Baghel, Minister for State Law and Justice, brother and sister judges of the Supreme Court, Chief Justice and judges of different high courts, brother Justice A.P. Sahi, Director, National Judicial Academy, members of National Legal Service Authority, State Legal Service Authorities, and District Legal Service Authorities, member secretaries of National Legal Service Authority, State Legal Service Authorities, and District Legal Service Authorities, law officers, senior advocates, media persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen. On the eve of Azadi Ka Amrit Mahotsav, my best wishes and greetings. In the 75 years of our independence, we have assembled here for the All India District Legal Service Authorities meet. In these 75 years, we have witnessed many sacrifices, achievements, and crises. Our resilient democracy helped us to withstand many a challenge, but we still have miles to go. It is time for our nation to collectively resolve to emerge as the world's best. Today, India stands as the 5th largest economy in terms of GDP and second most populous country in the world. In the 21st century, we are a force to be reckoned with. Our true strength at this juncture lies with our youth. With an average age of 29 years, India has one of the youngest populations in the world. 1/5 of the world's youth live in India. This huge human resources is properly trained will drive our economic progress. With skilled workers estimated to be only 3% of our total workforce, we need to harness the full potential of youthful demographic profile of our country. With the Western world increasingly failing short of skilled human resources, it is India's turn to fill up the gap globally. Justice, social, economic, and political. That is the vision of justice which our preamble promised to every Indian. The reality is that today only a small percentage of our population can approach the judicial delivery system when in the need. Majority of the people suffer in silence, lacking of awareness and necessary means. Modern India was built around the goal of removing the disparities in the society. Project Democracy is about providing a space for participation of all.
Participation will not be possible without social emancipation. Access to justice is a tool for social emancipation. The Legal Service Authorities Act 1987 was enacted with the objective of reaching the persons at the bottom of the pyramid. The fact that it is aimed at offering free legal aid to 70% of our population makes Nalsa the greatest legal aid provider in the world. Many of the objectives of Nalsa have been translated to social realities. This was made possible because of the sincere efforts of dedicated judges, advocates, who have been shaping the policies and paving the roadmap of Nalsa for the last 27 years. The governments also have been active partners in the Access to Justice project. If today we have reached people's doorsteps and have earned their trust, the acclaim goes to the cooperative functioning between the forward-looking judges, spirited advocates, volunteers, and the governments. I sincerely thank you all. I am glad that the 27 years long and noteworthy journey of Nalsa is being captured and celebrated through commemorative stamp with the Ministry of Communication, Government of India. I sincerely thank the Government of India for releasing the stamp. The purpose behind this conference is to introspect about various factors governing the administration of justice and to discover ways and means to bring quality improvement in the system. The district judiciary is the backbone of the justice delivery system in the world's largest democracy. The district judicial officers are the first point of contact for much of the population. Public opinion about the judiciary is primarily based on their experience with the district judiciary. This casts a great responsibility on our shoulders. You must undertake multifaceted tasks and roles. You are the best placed to understand people's problems and social issues. Every progressive policy must find its base on a strong foundation. Strengthening the district judiciary is the need of the hour. Without any doubt, the district judiciary is the driving force behind the legal aid movement in India. Wherever I go always, I attempt to project the achievements of the Indian judiciary in winning the trust and faith of the people. But if we intend to serve the people better, we need to flag the issues which hinder our functioning. There is no meaning in camouflaging or hiding the problems. If we do not discuss these issues, if matters of pressing concern are not addressed, then the system will cripple. I fear we may be unable to fulfill our constitutional mandate of social justice. I urge all of you, therefore, to discuss, debate, and decide. This is the principle I have been following all through. I know the challenges before you are enormous. The issues of conditions of service, remuneration, etc. deserves immediate attention. The Supreme Court this week tried to address some of these issues by way of directions of implementation of revised pay benefits. I hope all the concerned agencies will work together to sort out other issues as well. Today, technology has emerged as a great enabler. I urge upon all of you to use modern technology tools to enhance the pace of justice delivery. The agenda items reflects the need of importance of intervention by the district officers. One of the most important aspects which calls for your active consideration and intervention is in relation to the condition of under trials. The Honorable Prime Minister and the learned Attorney General have also rightly flagged this issue in the recently held conference of Chief Ministers and Chief Justices. I am happy to note Nalsa is actively collaborating with all stakeholders in securing much deserved relief for under trials. The next issue is that of effective representation before judicial forums. We need sincere and dedicated jail visiting advocates. Jail visiting advocates can later become the legal aid authorized defense counsels. Such advocates must also be accessible to families of the prisoners who are often unaware about their status. Similarly, counsels also must be aware about the conditions and needs of the prisoners and must make appropriate and timely applications before the authorities. Another important item on the agenda is strengthening the ADR and Lok Adalats. ADR through Lok Adalats, Gram Nyayalas, mediation and arbitration centers has the potential to transform the legal landscape of India by providing millions of people
a platform to settle their grievances. Matters ranging from matrimonial disputes, intergovernmental disputes, government contracts, and land acquisitions can be attempted to be resolved through mandatory ADR. This will not only reduce the pendency and backlog, but also will provide much-needed speedy justice to the affected parties. In this mission of justice, the occasion of young law students can potentially overall and the whole legal services landscape. Currently, approximately 1,701 universities and colleges, law colleges, are producing lakhs of law graduates every year. This interaction is not only important for marginalized people, but is also highly beneficial to young students in their career and personal development. This engagement will give necessary exposure to the students to the grassroots realities of our country and the judicial system. Further, law students should consider this is a golden opportunity to interact with their first ever client and make a substantial difference in their life. The services to society will shape you, your value, and ground you to the existing social realities. As said by Swami Vivekananda, I quote, "My hope of the future lies in the youth and of character, intelligent, renouncing all for the service of others and obedient and good to themselves and the country at large," unquote. I thank the Honorable Prime Minister for his constant presence and encouragement to the legal service movement. I also thank him for allocating necessary funds and taking active interest in the activities of Nalsa for the cause of justice. We all know how tight scheduled the Prime Minister's office is, yet my experience so far is that he has always readily agreed to associate himself with such events. In a span of 1 year, the Honorable Prime Minister has taken out valuable time to attend a number of events hosted by the judiciary. Thank you, the Honorable Prime Minister ji. I must also place on record my sincere thanks to Sri Ramana ji, the former President of India. He was always willing to guide us in each of our endeavors. I thank him on behalf of the entire judicial fraternity for his active association with the cause of justice. I also thank the Honorable Law Minister, Sri Kiren Rijiju. His active association with Nalsa is visible to all. His commitment to the cause of accessible to justice is really admirable. I sincerely thank him for taking up the issues which we have discussed in the last Chief Justice and Chief Minister's conference. My brother Justice Lalit, it is better not to say much. He is a creative leader who has been working with utmost dedication to turn access to justice into a reality. I am sure his innovative campaignings will turn a new page in the history of the legal service of India. Brother Justice Chnadrachud has already made a mark in giving a boost to accessibility through information technology. I am sure in times to come, the judiciary in this country will benefit from his vision. I take this opportunity to appreciate the efforts put by the various stakeholders, the legal service authorities, the panel lawyers, and the paralegal volunteers for showing immense flexibility and determination for the cause of justice even during such difficult times. The issues highlighted and resolved in this conference must find reflection on the ground level. I earnestly hope that the momentum continues and Nalsa also, along with the entire network of legal service authority, continues to display utmost passion and vigor. As a roadmap for the future, the legal service authorities are focused on developing an accessible mechanism to redress the violation of rights, empowering the people through legal services and legal awareness. I conclude by quoting Montaigne, the famous French philosopher. I quote, "In the state of nature, all men are born equal, but they cannot continue in this equality. Society makes them lose it, and they recover it only the protection of the law." Thank you very much for giving this opportunity. बहुत बहुत आभार ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन.वी. रमन्ना का उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, भारत का संविधान देश के ऐसे प्रत्येक नागरिक को मुफ्त कानूनी या विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो ज़रूरतमंद है। और इसी उद्देश्य के साथ सन 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट बना। उसी के अंतर्गत 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की स्थापना हुई
और आज नालसा प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में गठित अपने विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसा न्याय जो गुणवत्तापूर्ण हो, त्वरित हो और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भी हो। इसी विजन और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप तैयार करवाया है, जिसका आज यहाँ विमोचन होना है। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस N.V. रमन्ना से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से इस स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं। इस कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप का फर्स्ट स्पेशल कवर वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहां पर करेंगे। अपने 27 वर्षों के विधिक सेवा प्रदान करने की दिशा में बहुत सारे महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं और ये यात्रा अनवरत जारी है, बिना रुके और भी मजबूती के साथ। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार मंचासीन सभी विभूतियों का भी। देश में, ये देश जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ हर व्यक्ति तक न्याय की पहुँच हो, ये सुनिश्चित करना, यही संकल्प है नालसा का और यही संकल्प है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में। देवी सज्जनों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम सब जानते हैं कि लोगों के लिए जिस न्याय की परिकल्पना की गई है, उसमें सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय का भी उसमें उल्लेख किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में न्याय का अभाव या अन्याय व्यक्ति को मजबूर करता है जुडिशियल सिस्टम की शरण में जाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार जब देश का नेतृत्व संभाला और सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प राष्ट्र के समक्ष रखा, उस विश्वास का आधार ही था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्यायपूर्ण व्यवस्था। आपके इसी विजन के इर्द गिर्द सरकार द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का ताना बाना बुना गया है, जिससे समाज के शोषित, वंचित और दलित और गरीब वर्ग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। लीगल सर्विसेज एक्ट 2047 का जो ये आयोजन है जिस संकल्प के साथ, वो भी आपके उसी विजन का विस्तार है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने संबोधन से हम सबको प्रेरित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री N.V. रमन्ना जी, जस्टिस श्री U.U. ललित जी, जस्टिस श्री D.Y. चंद्रचूड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी और देश के कानून मंत्री श्री किरण जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, हमारे साथी राज्य मंत्री श्रीमान S.P. बघेल जी, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज, सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, भारत की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे आप सभी के बीच आना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन बोलना जरा कठिन होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज की ये इस तरह की पहली नेशनल मीटिंग है और मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुभ शुरुआत है, मतलब ये आगे भी चलेगा। आपने इस तरह के आयोजन के लिए जो समय चुना है, ये समय भी सटीक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है।
ये समय हमारी आजादी के अमृत काल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष करके ललित जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सब यहां संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। विशेष रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हमारे लीगल एड सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा। लेकिन आज हम गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में
जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें दुनिया में उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और 21वीं सदी की रियलिटीज के साथ मैच करने के लिए भी तैयार है। इसका श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। मैं आप सभी के इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, सामान्य मानवी तक जस्टिस डिलीवरी के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को भी टेक्नोलॉजी की इस ताकत का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा। एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो, उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो, रूल्स और रेमेडीज इसकी जानकारी हो। इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। पिछले साल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए पान इंडिया आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके पहले 2017 में प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। इसमें मोबाइल और वेब एप्स के जरिए लीगल सर्विसेज को आम लोगों के लिए एक्सपांड किया गया था। इस तरह के प्रयासों में अब ये अथॉरिटीज एक कदम और आगे बढ़कर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगी तो जनता का और हित होगा। साथियों, आजादी के 75 साल का ये समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय है। हमें ऐसे सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। देश में अंडर ट्रायल कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। आज यहां देश भर से डिस्ट्रिक्ट जजेज आए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। वैसे मुझे बताया गया है कि नालसा ने इस दिशा में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप
लीगल एड के जरिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं बार काउंसिल से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान से ज्यादा लॉयर्स को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, मुझे आशा है हम सभी के प्रयास इस अमृतकाल में देश के संकल्पों को नई दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है कि 2 दिन का ये आपका मंथन जिन अपेक्षाओं और आशाओं के साथ इतना बड़ा समारोह हो रहा है, उतने ही बड़े परिणाम लाएगा। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके शुभ संदेश के लिए और इस प्रेरक संबोधन के लिए। उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमें सदैव प्रेरित करती है। अभिनंदन और आभार उनका। देवी सज्जनों, इस 2 दिन के ऐतिहासिक आयोजन के उद्घाटन सत्र में अब समय है जब मैं निवेदन करूं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से कि वे आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए पधारें। Namaste. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable the Chief Justice of India, Shri Justice N.V. Ramana, the Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri Kiren ji, my distinguished colleague and the Executive Chairperson of the National Legal Services Authority, Shri Justice Uday Umesh Lalit, brothers and sisters on the bench of the Supreme Court, Chief Justices and Judges of the High Courts, judicial officers across the nation, distinguished members of the Bar, members of the National Legal Services Authority, the state and the district legal services authorities, and students of law. It is an honor to propose the vote of thanks for the inaugural of the first All India District Legal Services Authorities meet of 2022. We have gathered here to celebrate and deliberate on the realization of the constitutional ideals of access to justice. This first All India District Legal Services Authorities meet is an endeavor to honor the remarkable effort of the district level and grassroots stakeholders who have strived long and toiled hard to enable access to justice in the remote regions of our country. In a nation as vast as ours, where graded inequality still persists, justice ought not to be limited to the socio-economically privileged sections of our society. It is the duty of state actors to secure a just and egalitarian social order in which the legal system promotes justice and ensures that opportunities for securing justice are not denied to any segment of society due to social and economic disabilities. Nalsa is an ambitious project of constitutional reach which uses the bottom-up approach to ensure that access to justice penetrates through the rivers, mountains, and deserts of our beautiful landscape. The first session today is going to be deliberating upon artificial intelligence and technology. Nalsa, similar to the E-Committee of the Supreme Court, uses technology to enhance the outreach of its services. The E-Committee has established E-Seva Kendras in 26 high courts and 500 district courts to enable litigants to obtain information on the case status, extend assistance in e-filing of cases, and to avail of the full range of services provided by the e-courts project. Similarly, Nalsa provides online mediation services and a legal aid management portal which helps individuals secure access to information. Together, we possess the ability to taper the digital divide by widening the reach of technology. Technology does not have a human face, but deployed with understanding, it has the potential to realize access to justice. Appropriate technologies must be developed locally
and close consultation with the beneficiaries in order to optimize the benefits of the services we provide. Technology must not be used to substitute the role and labor of humankind. Rather, it must be employed to aid and enhance the work of humans. The challenge before us as judicial administrators is to maximize the outreach of our services by integrating technology with a human face. The deliberations over the next 2 days will enable us to assess where we stand and reach out with commitment to the future. The impact of technology on furthering access to justice to every citizen is significant. During this year, up to 28 July 2022, our e-Tal website has recorded 250 crore e-transactions. Up to 30 April 2022, 5.46 crore automated emails have been sent to citizens. 35 lakh hits are recorded daily on the eCourt Services mobile application. 19.2 million cases were heard on video conferencing by the high courts and the district courts as of 30 April 2022. 1.78 crore cases have been disposed of by virtual courts. The National Judicial Data Grid has data of 17 crore decided and pending cases. Common service centers in every Gram Panchayat are being set up under the auspices of the Digital India initiative of the Union Government. The integration of e-court services with common service centers will ensure that the reach of the Indian judiciary extends to every citizen in every village across India. I extend a sincere vote of thanks to the stakeholders who have gathered here today. I thank the Honorable Prime Minister for sparing his valuable time to attend this event and to share his vision for the future. I thank the Honorable Chief Justice of India, who is the pillar of support behind every initiative of the Supreme Court, including Nalsa and the E-Committee. I thank my brother judge, my distinguished colleague, Shri Justice Uday Umesh Lalit, for his invaluable drive to secure access to justice that has propelled the rights framework in a true direction. Our thanks to the Union Minister of Law and Justice, who has abundantly supported the endeavors of the Supreme Court and its interaction with technology. And I also thank every officer of the Department of Justice. I would also like to take this opportunity to thank the members of the National Legal Services Authority at the national, state, and district levels, without whose precious contribution the ideal of access to justice would have remained buried deep in the pages of law and statutes. They work and continue to work tirelessly to secure access to justice for the marginalized segments of society in remote locations across India. In the judicial system, they are truly our frontline workers. I would also like to extend my gratitude to the organizers for their excellent logistical support in convening this event. I look forward to our celebration of the ideals of Nalsa and therefore of the Constitution today and every day. Namaskar. Thank you. बहुत बहुत आभार ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का। देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट का उद्घाटन सत्र अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप सब अपनी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त करेंगे, जिनकी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है इस 2 दिन के हमारे कार्यक्रम में, इस आयोजन में। लीगल सर्विसेज एट 2047 उसको एक नई गति मिली है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, जो भी ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और वो सभी स्पेशल इन्वाइटीज़ जो हमारे आगे के टेक्निकल सेशंस में डैश पर होंगे मंच पर, उन सब के लिए वीवीआईपी लॉन्च में चाय की व्यवस्था है। आप सभी वहाँ प्रस्थान करेंगे और समय का अभाव है, इसलिए आप जितना शीघ्र हो सके वहाँ प्रस्थान करेंगे। बाकी जो डिग्निटरीज हैं ऑडिटोरियम में, उनके लिए एट्रियम में आपकी राइट साइड में जो गेट है उससे आप बाहर निकलेंगे, वहाँ पर आपके लिए चाय की व्यवस्था है। और जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए फॉयर में बिल्कुल पीछे आपके गेट है, वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप सबके लिए चाय की व्यवस्था है। लेकिन प्लीज़ इंश्योर
कि 30 मिनट्स का समय है टी ब्रेक का, और 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद हमारा टेक्निकल सेशन, जो पहला टेक्निकल सेशन है, दैट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन एनहांसिंग डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज, वो हमारा ठीक आधे घंटे बाद शुरू होगा।